You didn't went to school. Oh, it's holiday, right? Hi, Shubham. So again, you are the first one. Hi, Nishant. Hello, Momentum. इसको कैसे रखूं मुझे भी नहीं पता ना। हो गया, किसी दिन ये टूट जाएगा ऐसा मुझे फील होता है। हाय ओली। मैं सोच रही थी कि ओली से रिलेटेड कुछ, फिर मुझे याद आया कि मैं ओली नाम यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि यूट्यूब पे कोई और ओली है। 4 days left, it's freaking me out. मुझे तो अब डर भी नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे पता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने ऐसा बोल बोल के टाइम वेस्ट किया पढ़ने की जगह। गुड लक फॉर एग्जाम। थैंक यू श्री। ओके श्री, कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पढ़ा नहीं। तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है? बोलो श्री। तेजस। हाय तेजस। निशान, तुमने लिखा ना कि कैंटोक इज रियली ब्यूटीफुल, तो तुम कब आ रहे? तुमने वो तो बताया नहीं। दिस पर्सन इज न्यू राइट? सुधाकर। मैंने पहले नहीं देखा था सुधाकर को कभी। हाय सुधाकर। या फिर तुम हो कभी टेक्स्ट नहीं करते, ये भी हो सकता है। शी इज ऑलराइट। ओके हाय आदित्य। आदित्य शर्मा। ओके निशांत, मैंने कुछ पूछा तुमने जवाब नहीं दिया। मैं तो बढ़िया हूँ तेजस, तुम बताओ। आज थोड़ा ज़्यादा एनर्जी है क्योंकि आज ना प्रॉपरली सो के आई हूँ ना, इसलिए। गुड आफ्टरनून छोटू। हाय शिवम। Your eyes are truly beautiful. Oh, thank you so much, Velvier. हाय म्यूजिकल बीस्ट। बढ़िया हूँ मैं। ओके कहाँ से हूँ? मैं सिक्किम से हूँ। तभी तो मैंने पूछा निशांत को कि उसने बोला कि गैंगटॉक इज़ ब्यूटीफुल, तो मैंने उसे बोला कि कब आ रहे हो। उसने कुछ नहीं बोला। वेट हाँ, थोड़ा धीरे लिखना, मैं इतना जल्दी जल्दी नहीं पढ़ सकती। थैंक यू शिवम। स्मैश, बैडमिंटन या फिर टेनिस? प्रोफेशनल एग्ज़ाम चल रहा है। ओके ऑल द बेस्ट तेजस। ऑर्गेनिक को कैसे रिवाइज कर रहे हो? मैंने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा आदित्य, सैड बात। मैं सिर्फ बायो पढ़ रही हूँ। तुम स्टूडेंट हो? हाँ ऋषि हूँ तो। गुड आफ्टरनून अगर, इज इट अगर? हाँ गैंगटॉक। सुधाकर। हाय, आप कौन एग्ज़ाम की ऋत्विक, मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। शिवम चंद मैंने बोला तो मैं सिक्किम से हूँ। कैन आई सी योर हैंड्स प्लीज? यू कैन। स्पेक्स डालो ना। लुकिंग गुड, गुड विद स्पेक्स। स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है लेकिन मैंने उसको ना बंद कर दिया गंज। फर्स्ट ईमा नेम, माई फर्स्ट टीचर नेम वॉज। ओके छोटू, बट आई थिंक ईमा नेम इंडियंस में कॉमन नहीं होता है। दिस इज़ नेपाली नेम। मेरे पेरेंट्स नेपाली है इसलिए मेरा नेम ईमा है। तो तुम्हें कहाँ मिली ऐसी टीचर?
हाउ मच डिड यू स्कोर इन फर्स्ट अटेम्प्ट? अय्या, इतना कम कि बोलने में भी शर्म आ रही है। धन्यवाद। स्कूल या फिर समथिंग, क्या है तुम्हारा नाम? आई डोंट नो। मैं नहीं पढ़ रही हूँ कि टेक्स्ट? आई थिंक बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हो गया है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। जॉ लाइन्स नहीं देखना है, बुक्स देखना है अभी तो। क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ भी कुछ भी। ओके। हाय सिंचान। हाय वानी। वना, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस योर नेम। इट्स VANE। वना, वानी तो नहीं होगा। थैंक्स गणेश। ईमा पवार थी। ओके, लेकिन मैं ईमा छेत्री हूँ, पवार नहीं। थर्ड है प्रियांशु। मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करती। थैंक यू तेजस। सिक्किम में हिंदी नहीं बोलते, सिक्किम का हाँ लैंग्वेज ही नेपाली है। या फिर बहुत सारे ट्राइबल्स हैं ना, तो अपनी अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं। जैसे भूटिया भूटिया बोलते हैं, लिपचा लिपचा बोलते हैं, सुबह सुबह ही बोलते हैं। लेकिन ओवरऑल ज़्यादा मेजोरिटी लोग नेपाली बोलते हैं। MR सर की ड्रीम 45 ज्वाइन करनी है क्या? क्रैश कोर्स है? ओके आनंद। तुषार ने कुछ बोला है? माँ ऑल द बेस्ट। थैंक यू तुषार। हाय राजीव। वो उस दिन लास्ट में हम लोगों ने लाइव रहते रहते ही एक बार किया था ना, उसके बाद मैंने नहीं किया। आई थिंक एक वीक आगे की बात है, वो था लास्ट मॉक। एनीवेज अब स्टार्ट करते हैं। ओके निशांत, आर यू देयर? शुभम, आर यू देयर? अब मोटिवेट फ्रॉम यू लिटरली। कोई ऐसा बोलता है ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच लूफी। निशांत, आर यू देयर? आई थिंक लूफी भी हम लोगों के साथ ये स्लॉट तो पड़ेगा, है ना? मैं यहाँ पर आज स्लॉट मेंशन नहीं कर सकती, ओके? क्योंकि ना वाईफाई नहीं है, क्योंकि लाइट भी नहीं है, तो पीसी काम नहीं करेगा विदाउट लाइट वाईफाई। वो तो मैं कैसे बता सकती हूँ? शुभम इज देयर, ओके। हाँ ये वाला शुभम मैंने बोला था, ये वाला शुभम भी है। दोनों ही शुभम है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं एक कप चाय लेके आऊँ क्या? वैसे ना ये ब्लैक टी है तो बनाए ही पड़े हैं, नमक डाल के ना बस पोर करना है। मैं लेके आऊँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लाइक 2 मिनट जितना ही लगेगा। आई एम फ्रॉम बीजे। बीजे, बीजे क्या होता है? आई थिंक ना मैंने एक सुपर से सस गेम खेला था, उसमें बीजे का मतलब था ब्लैक जैक। वो मेडिकल कॉलेज का नाम है अहमदाबाद। ओ आई एम सो सॉरी। हाँ देखो एस्पिरेंट में ये होती है, मेडिकल कॉलेज के नाम भी नहीं पता। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओके मैं चाय लेके आती। स्लॉट 1 है शुभम, तुम ना मेंशन कर दो 1/10 कर दो, मैं पिन कर दूंगी अभी, क्योंकि मैं पीसी से नहीं लिख सकती ना, लाइट भी नहीं है, वाईफाई भी नहीं है। आई थिंक निशांत इज नॉट देयर, राइट? निशांत, आर यू देयर? मैंने इस इंसान को ना एक से ज़्यादा बार बुलाया, लेकिन ही इज़ नॉट देयर आई थिंक। कोई बात नहीं, ये कंजूस वाला शुभम आ गया है ना, शुभम जलान, तो हो जाएगा सब। मैं 2 मिनट में आई, ओके? जस्ट चाय लेके।
100 से शायद। टाइम तो 60 मिनट का किया है। शुभम नीट एस्पिरेंट नहीं है। मुझे पहचानना। हाँ तेजस तुम्हें पहचाना तो। जिसका प्रोफेशनल एग्जाम चल रहा है वही। पीके एडिट। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके आई थिंक शुभम ने नहीं लिखा, 1/10 करके लिख दिया। हाँ वैसे अभी तो 0/10 लिखना था ना, मैंने डिलीट कर दिया क्या पिन करने की वजह। अयो आई थिंक मैंने डिलीट कर दिया अनजाने में पिन करने की जगह। फिर से लिख दो शिवम। मैंने किसी और को पिन कर दिया शायद, अनपिन। शुभम फिर से लिख दो तो। शुभम शर्मा। हाय प्रशांत। छोटे भाई को क्या बोलते हैं? हाँ पिन कर दिया। मैं रीम्स से हूँ। ओ मैंने बोला था रीम्स इम्फाल करके, लेकिन जवाब नहीं आया। हाय डिवाइन। डिवाइन स्टार। अक्का मीन सिस्टर। अक्का का मतलब पता है मुझे क्योंकि वो मैंने वो सीरियल देखा था ना, ये है मुहावतें, तो उसमें इशिता को अक्का बोलते थे। तो अक्का का मतलब तो मुझे पता है, लेकिन छोटे भाई को क्या बोलते हैं इसलिए पूछा। तुमने मुझे हाय अक्का लिखा ना, तो मैंने भी तो बोला हाय, लेकिन छोटे भाई को क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता ना। चलो छोड़ दो, कुछ भी बोलते हो, अभी पढ़ना पड़ेगा। कल तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? लाइक कार एक्सीडेंट? मैं एलेक्स जब चाय लेने गई थी ना, तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, लेकिन तुम यार देखो कैसे आ गए। काफी डर लग रहा, मुझे तो डर भी नहीं लग रहा। Did you have your lunch? I did. Yep, I did. I did. Scribble or scribe. I don't know. Scribble Spark. Thanks, Alex. 1 + tan square x equals to for JE. मैं तो नीट हूँ। वैसे यहाँ पर लिखा था ना मैंने एक बार, लेकिन ना वो पेस्ट हो गया, उसके ऊपर कुछ और मैंने डाल दिया।
बेसिक मैथ्स जब करा रही थी ना, तो आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री कराया था उन लोगों ने, लेकिन मैंने वो पूर्ण दिया है, एकदम ढक दिया है, उसके ऊपर से एक और पेज डाल दिया ना। इट्स सनाया। शनाया मैं क्या बोलूँ आपको, वैसे मेरा ना, मैं ड्रॉपर हूँ ना, तो मेरा बायो एक बार पहले भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस बार भी फिर से मैं बायो ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बाकी सब्जेक्ट को इग्नोर किया। तो क्या बोल सकते हैं आपको, हो गया बोलूँ कि ना हो गया बोलूँ? हाँ मैंने खाना खा लिया। आई थिंक मैंने जो रिप्लाई दिया तुम्हें समझ में नहीं आया। हाँ मैंने अपना लंच कर लिया। ओके, अब तो हिंदी में बोला है, अभी तो समझ में आया होगा। थैंक यू एलेक्स। मैंने वैसे तुम्हें झूठ बोला था, तब तुम मुझे क्यों चिढ़ा रहे हो समर समर बोल के? आई थिंक मेरा झूठ ना मुझे ही भारी पड़ गया। मैं ये हाइड करूँ खुद के लिए, ताकि हम लोग पढ़ सके। वैसे मैंने टाइमर स्टार्ट नहीं किया है। इन्यूल नहीं, इमैन्युअल होता है। इन्यूल लिख दिया। चैट्स ऑफ कर दो। ओके मेरे लिए कर दूंगी। मैं सिक्किम से हूँ। वैसे मैं तो सबसे माहिर हूँ ना अपनी तारीफ खुद ही करने में। देखो कितना सुंदर फूल है यहाँ पर, बिल्कुल मेरी तरह। ये खुद आ गया, वरना यहाँ पर ये नहीं था। रीस्टार्ट करने की वजह से ऐसा हो गया। ओके सी यू एलेक्स, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। हाँ, और बाकी सबको गुड लक। मैं टाइमर स्टार्ट कर दूंगी अब। चैट्स मैं अपने लिए हाइड कर रही हूँ। शुभम तुम भी अपने लिए हाइड कर सकते हो। शुभम शर्मा को बोला ये मैंने, ये तो मैंने कर दिया हाइड। मैं टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ, अब मुझे चैट्स नहीं दिखेगा। एलेक्स मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी। गुड लक शुभम। और कौन था? दोनों ही शुभम को गुड लक, एस एस और एस पी को। और कौन पढ़ रहा था? पी के एडिट पढ़ रहा था ना शायद। तुम्हें भी गुड लक, जो जो पढ़ रहे हो सबको गुड लक। अब मैं चैट्स नहीं देख पा रही, इसलिए मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ। ओके कर दूँ ना? Semiconductor, electronics, semiconductors, electronics, materials, devices, and simple circuits. Classification of semiconductors: extrinsic semiconductor, impure semiconductor, and intrinsic semiconductor, pure semiconductor. Doped. Doped. N-type and P-type. Extrinsic semiconductor and intrinsic semiconductor. There are two types of conductors as extrinsic semiconductor and intrinsic semiconductor. Pure semiconductor, pure germanium and silicon. Pure form germanium and silicon. Ne equals to Nh equals to Ni, where Ne is number of free electrons is equals to number of holes, which is equals to number of intrinsic charge carrier. Intrinsic charge carrier, number of intrinsic charge carrier. This is intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. Pure semiconductors. Intrinsic semiconductors are pure semiconductors. Example: germanium and silicon. Example: germanium and silicon. Pure form germanium and silicon. Pure form germanium and silicon. Germanium and silicon. Pure form germanium and silicon. Intrinsic pure semiconductors. Okay, germanium and silicon. Ne, number of electrons. फैन फंडिंग मुझे अच्छे से दिख रहा है, थैंक यू। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस योर नेम, बट इट्स ई एल की भाई, इल की, आई डोंट नो, वट एवर। थैंक यू सो मच। ओके,
Pure semiconductors, intrinsic, pure semiconductor, pure, germanium and silicon form. Pure form germanium र silicon हुन्छ. के हुन्छ? germanium र silicon हुन्छ. Any number of electrons equals to number of holes equals to number of intrinsic charge carrier. Number of electrons equals to number of holes equals to number of intrinsic charge carrier. N equals to NH equals to Ni. Number of free electrons equals to number of holes equals to number of intrinsic charge carrier. Pure form germanium and silicon. Germanium and silicon. Extrinsic semiconductor, impure semiconductor, doped. Addition of foreign substances. Addition of foreign substances. Extrinsic, impure semiconductor, doped. Addition of foreign substances. N-type and P-type. Both are electrically neutral. Doped. Both are electrically neutral. N-type and P-type. N-type, pentavalent, P-type, trivalent, impurity. Group 15 and group 13. Example P, arsenic, Sp, antimony, etc. Impure semiconductor, doped. Addition of foreign substances. Both are electrically neutral. N-type and P-type. Pentavalent and trivalent, impurity. N-type, pentavalent, impurity. P-type, trivalent, impurity. Pentavalent, phosphorus, arsenic, antimony, etc. Okay, N-type, pentavalent, impurity. Phosphorus, IAS, antimony, and Sp. Phosphorus, antimony, Sp, etc. Okay, donor impurity. N-type, donor impurity. Number of electron is greater than number of holes. P-type, trivalent impurity, group 13. Example, aluminium, boron, A aluminium, B boron, indium, gallium, boron, aluminium, indium, boron, aluminium, indium, gallium, and thallium. They are trivalent. Okay, P-type. N-type, pentavalent impurity, group 15. Phosphorus, arsenic, antimony, etc. Donor impurity, Nd. Number of electron is greater than number of holes. Trivalent impurity, P-type. P-type, trivalent, P-type, trivalent impurity, group 13. Example, aluminium, B, boron, iron, indium, gallium. Aluminium, B, boron, iron, indium, Ga, gallium, Tl, thallium. Acceptor impurity, note here, acceptor impurity, NH is greater than Ne. Na. Number of holes is greater than number of electrons. Number of holes is greater than number of electrons. Acceptor impurity. Acceptor impurity. Number of holes is greater than number of electron. Acceptor impurity, Na. Trivalent impurity, group 13. Pentavalent. Pentavalent impurity र trivalent impurity हुन्छ. Pentavalent impurity मा नाइट्रोजन को ग्रुप आउँछ है. फोस्फोरस एन्ड नाइट्रोजन, पी फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, bismuth. Donor impurity, Nd. Number of electrons is greater than number of holes. Pentavalent impurity. Trivalent impurity मा 13 ग्रुप को हुन्छ. बोरोन, एल्युमिनियम, ग्यालियम, इंडियम र थालियम. Number of holes is trivalent मा number of holes is greater than number of electron. Both are electrically neutral. Both N-type and P-type are electrically neutral. Initially, both N-type and P-type semiconductor, extrinsic semiconductor, are electrically neutral. Both are electrically neutral. N-type and P-type, both are electrically neutral. Intrinsic semiconductor, pure semiconductor. At 0 Kelvin, pure semiconductor behave like insulator. Case 1, at 0 Kelvin, 0 Kelvin, not degree Celsius, okay, 0 Kelvin, at 0 Kelvin, intrinsic semiconductor, pure semiconductor, at 0 Kelvin, pure semiconductor behaves like insulator. In semiconductors, on increasing temperature, number of intrinsic charge carrier increases, hence conductivity of semiconductor increases. Case 1, at 0 Kelvin, at 0 Kelvin, okay. Conduction band, this is valence band. G gap between conduction band and valence band. In semiconductor, on increasing temperature, number of intrinsic charge carrier increases. Hence, conductivity of semiconductor increases. In semiconductor, on increasing temperature,
On increasing temperature, number of intrinsic charge carrier increases, hence conductivity of semiconductor increases. Case 2, at room temperature. At room temperature, this is conduction band and this is valence band. N equals to NH. Number of electrons in conduction band is equals to number of holes in valence band. Excuse me, at room temperature. Okay. Semiconductor at 0 Kelvin behaves as insulator. In semiconductor, on increasing temperature, number of intrinsic charge carrier increases. In semiconductor, on increasing temperature, number of intrinsic charge carrier increases. In semiconductor, on increasing temperature, number of intrinsic charge carrier increases. Hence, conductivity of semiconductor increases. In semiconductor, on increasing temperature, number of intrinsic charge carrier increases. Hence, conductivity of semiconductor increases. Okay. On increasing temperature, a conduction of semiconductor increases. Number of intrinsic charge carrier increase in semiconductor. Increasing temperature, number of intrinsic charge carrier increases. In semiconductor, on increasing temperature, number of intrinsic In semiconductor, on increasing temperature, number of intrinsic charge carrier increases, hence conductivity of semiconductor increases. Case 2, at room temperature. EV, EC, EV, EC. Valence band, conduction band. Valence band and conduction band. Okay, valence band and conduction band. Electron jump coil. Any electron in conduction band equals to NH, number of holes in valence band. Electron in conduction band equals to number of holes in valence band. Electron in conduction band equals to number of holes in valence band. Room temperature EC equals to EV. EC, EV. Number of electron in conduction band equals to number of holes in valence band. At room temperature. Number of electron in conduction band equals to number of holes in valence band. On increasing temperature, number of intrinsic charge carrier increases. Conductivity of semiconductor increases. Therefore, conductivity of semiconductor increases with increase in temperature. Number of holes in valence band equals to number of electron in conduction band at room temperature. Extrinsic semiconductor, N-type semiconductor, pentavalent impurity, P-type semiconductor. Now section there. Extrinsic semiconductors, N-type semiconductors, Ne is greater than NH. Ne is greater than NH. N-type semiconductor, pentavalent impurity, P-type semiconductor.
पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कहाँ गए इसे एन टाइप सेमिकन्डक्टर पी टाइप सेमिकन्डक्टर एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरमा दुईवटा आउँदै थिएन एउटा एन टाइप हो एउटा पी टाइप हो पी टाइप इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट हुन्छ पी टाइपमा एन टाइपमा इलेक्ट्रोन रिच पी टाइप आर ट्राइवैलेंट एन टाइप आर पेंटावैलेंट। मुझे इतना नींद क्यों आता है, नींद नहीं आ रहा है बस ना सोने जैसा मन हो रहा है। एन टाइप सेमीकंडक्टर number of electron is greater than number of holes. Donor impurity. Pentavalent impurity is added. Pentavalent impurity is added. Phosphorus, arsenic, Sp, antimony and bismuth. N-type semiconductor donor impurity. Pentavalent impurity is added. Pentavalent impurity is added. Process of impurity. Process of impurity addition is called doping. Doping is the addition of process of addition of impurity. Process of impurity addition is called doping. Doping is done in ppm, parts per million. Doping is done in parts per million. Due to pentavalent impurity, electron participate in bonding while fifth electron is very weakly bonded with parent atom. Fifth electron will become free just by thermal energy. Fifth electron will become free just by thermal energy at room temperature. N-type semiconductor donor impurity, pentavalent impurity is added. P phosphorus As, arsenic Sp, antimony Bi, bismuth. The process of impurity addition is called a doping. Doping is done in parts per million. Parts per million, okay? नींद आ रही है. Parts per million. Due to pentavalent impurity, electron participate in bonding due to pentavalent impurity, electron participate in bonding while fifth electron is very weakly bonded with parent atom. Pentavalent impurity is added. Phosphorus, arsenic, Sp, antimony and bismuth. Process of impurity addition is called doping. Doping is done in parts per million. Due to pentavalent impurity, electron participate in bonding while fifth electron is very weakly bonded with the parent atom. Due to pentavalent impurity, electron participate in bonding. Electron participate in bonding while fifth electron is very weakly bonded with parent atom. Fifth electron is very weakly bonded with parent atom. Fifth electron will become free just by thermal energy at room temperature. Fifth electron will become free. Fifth electron will become free just by thermal energy at room temperature. Fifth electron will become free just by thermal energy at room temperature. Just by thermal energy at room temperature, fifth electron will become free. Just by thermal energy at room temperature. Fifth electron will become free just by thermal energy at room temperature. Number of electron is greater than number of holes. Number of electron in conduction band is greater than number of holes in a valence band. Number of electron is greater than number of holes. N-type semiconductor ma pentavalent ma number of electron is greater than number of holes. Pentavalent impurity and pure semiconductor both are electrically neutral. Pentavalent impurity and pure semiconductor both are electrically neutral, hence N-type semiconductor are also electrically neutral. Pentavalent impurity and pure semiconductor both are electrically neutral. Hence, N-type semiconductors are also electrically neutral. Okay. Pentavalent impurity पनि neutral हुन्छ, N-type semiconductor पनि neutral हुन्छ.
भनेपछि के हुन्छ एन र पी दुइटै न्युट्रल हुन्छ होइन hence n semiconductor are also electrically neutral hence n type semiconductor are also electrically neutral minority carrier holds NH majority carriers Na pentavalent impurity and pure semiconductor both are electrically neutral hence n type semiconductor are also electrically neutral pentavalent impurity and pure semiconductor both are electrically neutral hence n-type semiconductors are also electrically neutral pentavalent impurity and pure semiconductors both are electrically neutral pentavalent impurity and pure semiconductor both are electrically neutral hence n-type semiconductors are also electrically neutral मैं अभी आई ओके
तो सब कुछ डार्क हो गया। आई थिंक मुझे कैंडल जलाना पड़ेगा। लाइट आया ही नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ। दोनों ही मैच स्टिक पूरा यूज किया है। मैंने रूम ही ऐसा बना के रखा है ना, इसलिए ही मुझे इतना ज्यादा नींद आता है। यहाँ पर ना कोई भी आ जाए ना, वो उसे भी नींद आएगा। मैं बाहर का दरवाजा खोल देती हूँ। काफी नींद आ रहा है यार। अब शायद ना कहीं से तो लाइट आए। ये विंडो भी खोल देना चाहिए। ऑब्वियसली नींद आएगी ही ना। इतना कोजी है को देख के ही लगता है कि रात हो गया है, तो ऑब्वियसली नींद भी आएगी। इसको भी खोल देती हूँ, थोड़ा तो रोशनी आए कहीं से। आले के तुझे। हाँ, वापस से आ गई मैं। आई होप कि इस बार ना। अब थोड़ा लाइट आ गए है ना, मैंने बाहर का दरवाज़ा भी खोल दिया है और ये वाला भी विंडो से भी हटा दिया है कर्टेन्स को, और एक कैंडल भी जला दिया है। जैसे मैं टाइमर पॉज करके गई थी, तुम लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ पाओगे। अब स्टार्ट कर रही फिर से टाइमर। ओके। Number of electron is in conduction band. Number of electrons in conduction band is greater than number of holes in valence band. Excuse me. Number of electrons in conduction band is greater than number of holes in valence band. Number of electrons in conduction band is greater than number of holes in valence band. Number of electrons is equals to number of holes. Number of electron is greater than number of holes. Number of electron is equals to number of beta. क्या लिखा है मुझे नहीं पता. Pentavalent impurity and pure semiconductor.
Pure semiconductor, pentavalent impurity and pure semiconductor both are electrically neutral. Hence, n-type semiconductor are also electrically neutral. Minority carrier holds majority carrier in n-type semiconductor electron. P-type semiconductors, trivalent impurity is added. Trivalent impurity is added. B boron, Al aluminum, iron indium, Tl thallium, Ga gallium. They are acceptor impurity, electron minority, holes majority, Ne equals to Np. Number of protonic. Okay, the Ne number of electron is equals to number of protons. N-type semiconductor. Number of electron is greater than number of holes. P-type semiconductor, trivalent impurity is added. B boron, Al aluminum, iron indium, Tl thallium, Ga gallium. Trivalent impurity is added. They are acceptor impurity. They are acceptor impurity. Electron minority, holes majority, Ne. Number of electron is equals to number of proton. Number of electron and proton remain same. P-type semiconductors are electrically neutral. P-type semiconductors are electrically neutral. NH number of holes is greater than number of electrons in conduction band. Number of holes in valence band is greater than number of holes in valence band is greater than number of electrons in conduction band. Number of holes in valence band is greater than number of electrons in conduction band. Okay. Pentavalent and trivalent trivalent impurity p type में अरे हाँ स्किन सॉफ्ट तो होती है ना. N type, P type, trivalent impurity. Number of holes in valence band is greater than number of electron in conduction band. Okay, number of electron is equals to number of proton. Number of electron is equals to number of proton. Number of electron is equals to number of proton. And proton remains same. Okay, p-type semiconductor are electrically neutral. P-type semiconductor are electrically neutral. Trivalent impurity is added. They are acceptor impurity. Electron minority, holes majority, N equals to Np. Number of electron and proton remains same. P-type semiconductor are electrically neutral. N type में number of electron greater हुन्छ, P type में number of holes greater हुन्छ, number of electron भन्दाखेरि. Pure semiconductor में N equals to NH. This is conduction band, this is valence band, this is ED, electron donor. Acceptor impurity, Na हाम्रो ND हुन्छ donor के ED, energy of donor. Conduction band हमेशा माथि हुन्छ, valence band मुनिपट्टि हुन्छ के. Impurity ऊपर हुन्छ. Conduction band को मुनिपट्टि donor impurity, valence band को माथिपट्टि acceptor impurity and donor impurity. Acceptor impurity and donor impurity. सो जाती हूँ, डर लगता है मुझे. इतना करने के बाद भी मैं नहीं सोना चाहती ना. Mobility of electron is higher than the holes. Mobility of electron is higher than the holes. Hence, N-type semiconductor with same number Ne of NH in P-type semiconductor. Mobility of electron is higher than the holes. Mobility of electron is always higher than holes. Hence, for N-type semiconductor, for N-type, that is N-type impurity, electron rich impurity. For N-type semiconductor with same number of Ne of NH in P-type semiconductor, mobility of electron is higher than the holes. Hence, the N-type semiconductor with same number of electron of NH in P-type semiconductor. Okay. N-type electron is equal to number of holes in P-type. Number of electrons in N-type is equal to number of holes in P-type. But still N-type has
or will have more conductivity because the mobility of electron is always greater than hole. Mobility of electron is higher than the holes. Will be n-type will be more conducting as it has electron. N-type will be or will have higher conductivity as it has more electron. Electrons have higher mobility in comparison to holes. Conductivity. Number of intrinsic charge carrier. Number of electrons. N-type will be conducting. 15. Mass action law. Thermal equilibrium. Number of intrinsic charge carrier Ne. Number of electron dot NH. Number of holes. Thermal equilibrium. Mass action law की thermal equilibrium Ni square equals to Ne into NH. Ni square. Thermal, okay, Ni is number of intrinsic charge carrier. Number of intrinsic charge carrier. Ni square equals to Ne dot NH. Ne dot NH. Ne number of electrons multiplied with number of holes. Number of intrinsic charge carrier is equal, okay, Ni square equals to Ne number of electrons multiplied by number of holes. When we increase temperature, number of charge carrier increases in semiconductor. When we increase temperature, resistance decreases, resistivity decreases, conductance increases. In conductor, resistance increases, resistivity increases, and sigma conductance decreases. When we decrease temperature, resistance increase in semiconductor, resistivity increase in temperature. So in semiconductor, resistance increases, resistivity increases, but conduction decreases. But when we decrease temperature in conductor, resistivity decreases, resistance decreases, but conductivity increases. Okay. Number of charge carrier less in semiconductor when temperature is decreased. When we increase temperature, it will increase randomness of charge carrier. Collision increases, loss of energy increases, resistance increases, conductivity decreases. तो बुरा हो रहा है ना मेरे साथ. The manifestation of bond structure in solid is due to Pauli's exclusion principle. The manifestation of bond structure in solid, band structure in solid. The manifestation of band structure The manifestation of band structure in solid is due to Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. मुझे वहाँ पर नहीं देखना चाहिए ना, लेकिन मैं देख रही हूँ. Which of the following energy band shows the p-type semiconductor?
conduction band, valence band. Okay, p-type semiconductor, they are trivalent, impurity, electron acceptor, impurity level correct, n-type, donor impurity. Thermal equilibrium or mass action law, Ni square equals to N dot Ne dot NH, Ne dot NH, that is Ne into NH, Ni square, number of intrinsic charge carrier square equals to Ne dot NH. What is the energy gap in silicon conductor? What is the energy gap in semiconductor? Semiconductor. What is the energy gap in semiconductor? Silicon semiconductor. What is the energy gap in silicon semiconductor? It is 1.1 electron volt according to NCERT. Okay, 1.1 electron volt semiconductor. What is the energy gap in semiconductor? The energy gap in semiconductor, the energy gap of semiconductor is 1.1 electron volt, and for germanium it is 0.7 electron volt. For germanium it is 0.7 electron volt. For silicon it is 1.1 electron volt. 1.1 electron volt for silicon. मैं भूल जाती हूँ, याद करके भी क्या फायदा. For germanium it is 0.7 electron volt. पता नहीं कैसे पढ़ते हैं लोग, मैं तो भूल ही जाती हूँ. For silicon it is 1.1 electron volt, and for germanium it is 0.7 electron volt. Energy gap in silicon conductor, 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 silicon semiconductor. Okay, 1.1 electron volt, germanium 0.7 electron volt. A pure semiconductor has an infinite resistance at 0 degree Celsius. 0 degree Kelvin में होती है, not in 0 degree Celsius, in degree Celsius. At ordinary temperature, an increase in temperature increases the conductivity of semiconductor insulator. Both in insulator to the conductivity increase. At ordinary temperature, an increase in temperature increases the conductivity of semiconductor and insulator. Both in insulator to the conductivity increases. A pure semiconductor has an infinite resistance at 0 degree Celsius. 0 degree Kelvin में होता है.
डिग्री सेल्सियस में नहीं, ओके। A pure semiconductor has a finite resistance which does not depend on temperature. A finite resistance which increases with the temperature. A finite resistance which decreases with temperature. Okay. Excuse me. In semiconductor at room temperature, the valence band is partially empty and the conduction band is partially filled. In semiconductor at room temperature, the valence band is partially empty and the conduction band is partially filled. In semiconductor at room temperature. In semiconductor at room temperature, the valence band is partially empty and the conduction band is partially filled. The valence band is completely filled and the conduction band is partially empty. The valence band is completely filled. The conduction band is completely empty. In semiconductor at room temperature, the valence band is partially empty and the conduction band is partially filled. At room temperature. In semiconductor at room temperature, the valence band is partially empty and conduction band is partially filled. The electrical conductivity of a semiconductor increases when electromagnetic radiation of wavelength shorter than 2480 nanometer is incident on it. The band gap of the semiconductor. I think मुझे एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए वरना मुझे नींद मेरे पीछा नहीं छोड़ने वाली। अभी भी बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? एक्सरसाइज नींद की बात करेंगे। बारिश भी होने लगी। आई थिंक नेटवर्क भी खराब होने लगेगा ना अब। An electrical conductivity of a semiconductor increases when electromagnetic radiation of wavelength shorter than 2480 nanometer is incident on it. The bond gap of the semiconductor is E equals to Hc upon lambda. E equals to Hc upon lambda. ब्रेक ले, हम लोगों ने 40 मिनट कंप्लीट कर लिया है और मुझे बहुत ही मुश्किल हो रही है इसे बैठ के पढ़ना। 2480 nanometer is incident. The electric conductivity of a semiconductor increases when electromagnetic radiation of wavelength shorter than 240. The electric conductivity of a semiconductor increases when electromagnetic radiation of a wavelength shorter than 2480 nanometer is incident on it. The band gap of the semiconductor is E. Let's see. 1240 nanometer or something. 12480. 2 6 are 12, 2 2s are 4. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8. 2 3s are 6, 2 1s are 2. 2 6 are 12, 2 2s are 4. 31 1s are 31, 32, 2s are 62. 0.5. 0.5 electron volt. E equals to Hc upon lambda. E equals to Hc upon lambda. E equals to Hc upon lambda. 0.5 electron volt. The electrical conductivity of a semiconductor increases when electromagnetic radiation the electrical conductivity of a semiconductor
The electrical conductivity of a semiconductor increases when electromagnetic radiation of a wavelength. The electric conductivity of a semiconductor increases when electromagnetic radiation of wavelengths shorter than 2480 nanometer is incident on it. The band gap of the semiconductor is. The electrical conductivity of a semiconductor increases when electromagnetic radiation of wavelength shorter than 240 nanometer is incident on it. The band gap of the semiconductor is 0.5 electron volt. Copper and silicon is gold from copper and silicon is gold from 300K to 600K, 60K, 300K Kelvin, 300 Kelvin to 60 Kelvin. The specific resistance. Copper and silicon is gold from 300 Kelvin to 60 Kelvin. The specific resistance. Semiconductor. This is conductor. कॉपर को इंक्रीज करता सेमीकंडक्टर को डिक्रीज करता सिलिकॉन को डिक्रीजेस ना इंक्रीजेस इन कॉपर but decreases in silicon. In semiconductor, which of the following relation is correct at a thermal equilibrium? Thermal equilibrium, Ni square equals to Ne dot Nh. Ni square equals to Ne dot Nh. Ni square equals to Ne into Nh. Forbidden energy gap of germanium is 0.75 electron volt. 0.7 लिखते हैं ना अभी 0.75 जैसे 1.1 forbidden energy gap exactly वही तो पढ़ा था 0.7 electron volt 1.1 electron volt for semiconductor 1.1 electron volt for semiconductor silicon semiconductor 1.1 electron volt for germanium. It is 0.7 electron volt for germanium. It is 0.7 electron volt. Okay, the forbidden energy gap of germanium is 0.75 electron volt. Maximum wavelength of incident. Okay, 0.75 electron volt. Forbidden energy gap for germanium. For silicon, it is 1.1. Maximum wavelength of incident radiation of photon for producing electron. Hole pair in germanium. Forbidden energy gap of germanium is 0.75 electron volt. Maximum wavelength of incident radiation. Maximum okay. अहिले भर्खर हामीले के लिए E equals to Hc upon lambda पढेको छौँ हैन. Forbidden energy gap of germanium is 0.75 electron volt. That is germanium को कति छ 0.75 electron volt. Maximum wavelength of incident radiation of photon for producing electron hole pair in germanium semiconductor is maximum wavelength. Okay, wavelength खोज्नु रहेछ. Lambda equals maximum wavelength of incident radiation of photon for producing electron hole pair in germanium semiconductor. E equals to Hc upon lambda. Lambda equals to Hc upon E. 1200. 1240 upon 0.75 0.75 10 to the power 4 124 upon 75.
7 to 5 is 10, 10 goes 0, 1 into 7, 7, 7 to 14, 15, 150, 2 ones are 75, 4 minus 14 minus 5, that is 9, okay, then 11 minus 7, 10, 4, 49, okay, 7, 8, 9, 10, 11, पॉइंट लगा के 0, 75 into 4, 75 into 5, 5 is 25, so 5 to the 7 5 so 35, 7 5 to 35, 68, that's 1, 5 is 25, 37, मतलब this okay, 37, 75 into 6, 5 5 is 25, 5 6 35, 7 is 35, 5 is 25, 5 6 is 30 को 0, 3 तो भैया 25, 5 6 5 is 5, 5 is 10, 5 is 15, 5 is 20, 5 is 25, 5 6 is 30 को 0 तो भैया 6 6 36, 6 7 42, 43, 44, 45, 450. Good. 1.65. 1.65 into कतिवटा छ भन्दा तीनटा छैन आर्मस्ट्रङ भुल गई यो जी आन्सर हुन्छ त्यो आर्मस्ट्रङमै त हुन्थ्यो नि नानोमिटरमा आउँदैन किनकि मैले भ्याल्यु नै यो युज गरेको छु कि आर्मस्ट्रङमै आउँछ ओके गट इट आर्मस्ट्रङ इन्टु 10 to the power 4 आर्मस्ट्रङ हो कि त्यो 165 दुईटा गइहाल्यो अझै दुईटा थपिन्छ आर्मस्ट्रङ 1 2 16500 16500 वाह क्या सही आंसर आया है यार आर्मस्ट्रॉन्ग In an intrinsic semiconductor, the density of conduction in an intrinsic semiconductor, the density of conduction electrons conducting electron is density बताएको छ यो density of conducting electron equals to 7.07 into 10 to the power 15 meter cube when it is 7.07 into 10 to the power 15 meter cube. When it is doped with indium, the density of holes become 5 into 10 to the power 22 meter cube. Find the density of conduction electron in doped semiconductor. Ni square equals to Ne into Nh. In an intrinsic semiconductor, the density of conduction electron is 7.07 into 10 to the power 15. When it is doped with indium, the density of holes become 5 into 10 to the power 22.
In an intrinsic semiconductor, the density of conduction electron is 7.07 into 10 to the power 15 meter cube. When it is doped with indium, the density of holes become 5 into indium holes हुन्छ ट्राइभ्यालेन्ट भन्छ पी टाइपमा ग्रुप 13 को नि ट्राइभ्यालेन्ट हो त Ni square equals to 7.07 into 10 to the power 15 into 5 into 10 to the power 22. Ni square equals to 7 5 35 को 5 3 तक okay 7 0 5 0 0 5 7 35 5 7 35 35 35 into 10 to the power 20 plus 15 22 plus 15 35 36 37 10 to the power 37 ये तो होगा ना अच्छा मुझे क्या ढूंढना है फाइंड द डेंसिटी ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डोप्ड सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन का ढूंढना है मैंने गलत किया Ni square equals to Ne into NH. In an intrinsic semiconductor, the density of conduction electron is अस्तगफिरुल्लाह क्या कर सकते हैं It is an intrinsic semiconductor. The density of the conduction in an intrinsic semiconductor, the density of the conduction electron is 7.07 into 10 to the power 15. 7.07 into 10 to the power 15 meter cube. In an intrinsic semiconductor, the density of the conduction electron is 7.07 into 10 to the power 15 meter cube. Yeah, that was a huge number. Don't you think so? मुझे हंसी आ रही है मैंने यहाँ पर डॉक्टर ईमा लिखा था ओ माय गुडनेस चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं Ni स्क्वायर इक्वल्स टू Ne into NH क्यों लिखा था मैंने मुझे नहीं पता लेकिन मैंने लिखा था It is an intrinsic semiconductor in an intrinsic semiconductor the density of the conduction electron is 7.07 into 7.07 into 10 to the power 15 into 10 to the power 15 okay when it is doped in indium the density of holes become 5 into 10 to the power 22 meter cube. Find the density of conduction electron in doped semiconductor. Okay, 7.07. 7 into 7.07. 7 sevens are 35. 7 0 0. 7 sevens are 35. 2 3. 7 sevens are 49. 9 43. 7 sevens are 49. 5 3. 10 14 को 4 4 is 8 4 9 okay 1 2 3 4 49
49.8435 into 10 to the power 30 equals to NE into, yeah, divide into 5 into 10 to the power 22. Is it 30? Yes, it is 30. NE equals to 49.8435 into 10 to the power 30 minus 22. That is 30 minus 22. 8, 10 to the power 8. Okay? Upon 5. 5 ones are 5. 5 5s are 25, 5 is 35, 35, 5 8s are 45, 9s are 45, 5 9s are 45, 5 9s are 45. 5 is 25, 5 is 30, 5 6 are 30. Astaghfirullah. Okay, I'll get so embarrassed. 5 8s are 40. 3 8s are 5 7s are 35. That is NE equals to 9.9687 into 10 to the power 8. Which, ayo, this is 1. अगर इसको 1 लिया तो NE equals to 0.99687 into 10 to the power 9 होगा ना ये. तो हाँ, अप्रॉक्स 1 ले सकते हैं. 1 into 10 to the power 9 ले सकते हैं. मेरा चार्ज ना 2% हो गया. मैंने सोचा भी नहीं था. आजकल ना मैंने बहुत बार ना फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया है ना, तो चार्ज बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होता है. आई थिंक मुझे ऑफ करना ही पड़ेगा. वैसे किसी का भी तो मैंने ऐसे ही खुला रख दिया. इसको चार्ज में भी तो डाल सकते थे, है ना. 2% का मुझे नोटिफिकेशन आ गया है यार. मैं क्या कर सकती हूँ उसमें. और ये लाइट आ भी नहीं रहा है. चार्जिंग ओनली. अब पीसी ड्रेन होगा जल्दी से. फिर 1% ही दिखा रहा है. आई थिंक मुझे ऑफ कर देना चाहिए, वरना एक और बार वो होगा. बस एक ही स्लॉट कर पाए इस बार हम लोग. Pure Si silicon at 300 Kelvin has holes and electron densities. Pure silicon at 300 Kelvin has hole and electron density at has hole and electron densities are 1.5 into 10 to the power 16. दोनों का ही. Doping it by an impurity increases the hole's density NH. That is N का है. NH equals to 4.5 into 10 to the power 22. Electron density in doped silicon is Ni square equals to Ne into NH. Ni square. स्लॉट 1 कंप्लीट हो गया. ओके, मैं ज़्यादा रे भी नहीं पाऊंगी. नोट करके मैं चली जाऊंगी क्योंकि स्विच ऑफ ही तो होना है. Ni square equals to Ne. 1.5 into 10 to the power 16 into 4.5 into 10 to the power 22. Ni square. 1.5 into 1.5, that is 5 5 are 25 for 5. 2 eta gayo. 5 5 6 7. Astaghfirullah, I'll be fine now. 1 5 are 5. 1 1 are 1. 5 12 10 11 12 12 for 2. 1 eta gayo. 2.25. 2.25. 4.5 into 4.5. 4.5. 5 is 25 for 5. 2 the 4 4 5 are 20. 21 22. 6 is 20. 20 to 0. 2 the 4 1 4 4 is 16. 17 18. 5 2 8 9 10 10 to 0. 2 the way na. It's okay ma. 2025 2025 32 plus 44 I guess. इतना नंबर नहीं आना चाहिए है ना. Density.
फिर से मैंने गलत फार्मूला डाल दिया। आई थिंक 1.51 इंटू 10⁻16। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछा है। मैं चली जाती हूँ। ओके, मेरे पास चार्ज ही तो नहीं है। हाँ, स्लॉट ओवर हो गया विवेक। इतना गार है ना भाई, तू स्टडी विद सोम्या। सेमीकंडक्टर तेरा बायो है, गधेड़े गईगा। वैसे मैं खुद ही बोलती रहती हूँ ना कि मैं बायो ही पढ़ती रहती हूँ, बायो ही पढ़ती रहती हूँ, तो इसको लगा होगा ये बायो है। सेमीकंडक्टर बायो नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। बुद्धू ही पढ़ ले बहन तू भी, वरना चैप्टर्स भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगी कि कौन सी सब्जेक्ट की है। थैंक यू आदित्य। मैं 2 चैनल से जुड़ गया आपसे, है ना। वो मेरा दूसरा वाला चैनल भी है, आप लोग जुड़ सकते हो। वैसे वहाँ पर मैं गाली ही खाती रहती हूँ सबसे। मॉक में कितना आ रहा है आपका? आई थिंक रिसेंट वाले में तो 239 जितना आया था। जर्मेनियम del V equals to 0.3 volt and for silicon 0.7 volt. ओके, del V ओके, पोटेंशियल बोल रहे हो क्या? del V equals to 0.3 volt for germanium and del V equals to 0.7 for silicon। हाँ, शायद याद कर पाऊँ। ऐसे मुझे कुछ चीज़ें याद होता नहीं। हाय आयशा, योर्स ट्रूली सौम्या। सौम्या तुम दो दो उससे आती हो क्या? अभी एक पता नहीं क्या क्या बोल के गए ना, मैंने उसको खूब गाली दिया। वो तुम तो नहीं हो ना? तुम्हारे इसमें नाम ना ग्रिंड है, तो उसमें पता नहीं सौम्या ही था शायद। आई थिंक तुम नहीं हो, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग होते हैं ना। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्लॉट्स? 10 करेंगे आज, लेकिन अभी बस एक ही हुआ है। गुड़िया, हाय गुड़िया। शुभम शर्मा ने कंप्लीट कर दिया, शुभम ने कंप्लीट कर दिया। ओके, हाँ तुमने लिख तो दिया, मैं पिन तो कर दूंगी वैसे, लेकिन मेरा चार्ज ज़्यादा नहीं है। आई थिंक 1 हो गया होगा ना, अब 2 हो गया है, पहले ही 1 था। सिस्टर विच स्टेट यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम सिक्किम पीडी। सेंटर कहाँ पे गिरा इमा? व्हाट इज गिरा? मतलब कि मेरा सेंटर कहाँ पर है? मेरा सेंटर मेरे ही स्टेट में है। गिरा मतलब तो गिरना होता है ना, लाइक ड्रॉप। मैं ना ये लास्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैं चली जाती हूँ। ओके, मैंने ना यहाँ पर फॉर्मूला गलत लगाया था, तो मेरा आंसर ही नहीं आया है। मर मर के पढ़ती हूँ, उसमें भी रॉन्ग आंसर आता है। जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट यू हैव इंस्पायर्ड मी इन मेनी वेज।